Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi, and today I am going to talk to you in English language. You know very well it is English as spoken class, and welcome back to our English conversation class. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Today I am going to talk with Mrs. Noor Sabah. I request you that please answer my every questions. So Mrs. Noor Sabah, hi, how are you? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum assalam wa rahmatullah. I'm fine, alhamdulillah. Where are you speaking from right now? I'm speaking from Punjab. You are speaking from Punjab. Are you a student or are you a teacher? I'm a student. Okay, so do you know English language? Yes, I know English language. Can you speak English? Yes, I can speak English. Just now I want to talk to you and I want to converse with you. So Mrs. Noor Sabah, do you know present simple tense? Yes, I know present simple. And do you know the structures of present simple tense also? Yes, I know. What is the structure of positive sentence? Yes, I know. What is the structure? Please tell me the structure. Subject plus first form plus object. Yes, subject plus first form plus object, but you can add s or es in the last of the verb when we use as a he, she, it, name as a subject. Okay, so now I am going to ask you, tell me, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ. I get up early in the morning. मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ. I go to school every day. मैं सुबह कुरान पढ़ता हूँ. I recite the Quran in the morning. मैं रोजाना सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ता हूँ. I pray salah in the morning. क्या आप Every day. मुसलमान हैं? Are you Muslim? क्या आप एक खुदा पर ईमान रखते हैं? Do you believe one God? इन वन गॉड. क्या आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं? Do you believe one Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? डू यू बिलीव इन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्लास में इंग्लिश बोलती हैं? Do you speak in the class? डू यू स्पीक के साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड करें. डू यू स्पीक इंग्लिश इन क्लास? Do you speak English in the class? यस ऑफ कोर्स. हाँ, मैं क्लास में इंग्लिश बोलती हूँ. Yes, of course, I speak English in the class. आप कहाँ रहती हैं? वेयर डू यू लिव? Where do you live? मैं पंजाब में रहती हूँ. I live in Punjab. आप क्या करती हैं? What do you do? मैं पढ़ाती हूँ. I teach. क्या आप खाना बना लेती हैं? Do you cook? हाँ, मैं खाना बना लेती हूँ. I cook food. मैं आपको नहीं जानती हूँ. I don't know. क्या आप कोई अंग्रेजी ग्रामर की किताब पढ़ती हैं? Do you read any grammar? ग्रामर बुक. हाँ, यू कैन से डू यू स्टडी एनी ग्रामर बुक और डू यू रीड एनी ग्रामर बुक. हाँ, मैं एक ग्रामर की किताब पढ़ती हूँ. I study a grammar book. क्या आप इंटरमीडिएट पढ़ती हैं? Do you study intermediate? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. मैं इंटरमीडिएट पढ़ती हूँ. Yes, of course. I read intermediate book. ओके, वेरी गुड. क्या आप 5 वक्त की नमाजें अदा करती हैं? Do you pray salah five salah? अगेन कीजिएगा. डू यू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे. रिमेंबर कीजिए, डू यू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे. फिर से देखिएगा. क्या आप एक दिन में 5 वक्त की नमाजें अदा करती हैं? Do you offer salah 5 times today? अ डे. अ डे. डू यू ऑफर सलाह 5 टाइम्स. हाँ, मैं एक दिन में 5 वक्त की नमाजें अदा करती हूँ. Yes, I offer salah in the day. क्या आप कुरान पढ़ सकती हैं? Do you read the Quran? Do you recite the Quran? कैन यू. यहाँ पर करिए सकती है. कैन यू रिसाइट द होली कुरान? Can you recite the Holy Quran? हाँ, मैं कुरान पढ़ सकती हूँ माशाअल्लाह. Yes, I can recite the Quran. यहाँ पर ये जुमले. क्या आप अरेबिक बोल सकती हैं? Can you speak Arabic languages? सॉरी, मैं अरबी नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं उर्दू और हिंदी अच्छी तरह बोल सकती हूँ. No, I can't speak Arabic language, but I speak in Urdu and English. एंड इसमें कैन ऐड कीजिए.
No, I can't speak Arabic, but I can speak Urdu and Hindi very well. Okay? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकती हैं? Yes, I can't teach Arabic, but I can teach Urdu. Urdu and English, you can say. That's very Urdu good. and English. Okay, that's. Do you study with me? आप मुझसे पढ़ती हैं? Yes, I study with you. Which class do you join? I joined 11:35. Oh, mashallah. Do you study Champak magazine also? Yes, I study Champak magazine also. How is this magazine? This magazine is very good stories. When you study Champak magazine, do you enjoy also? Yes, I study Champak magazine. Do you solve by yourself? क्या आप खुद से हल भी करती हैं? Yes, I solve magazine myself. Yes, I solve myself. कैसे बोलिएगा? I solve myself. myself. Very good. So, do you have any problem for understanding my classes which I teach you? No, I don't face. Everything is good? Yes, everything is good. Are you satisfied with my teaching? Yes, I satisfied with your teaching. That's very good. Thank you so much for talking to me. Inshallah ta'ala, I will talk to you again tomorrow. This was Mrs. Noor Sabah. Whenever I think if she continue work hard tomorrow, she will be a good English speaker. I have asked lots of questions using present simple tense, and this tense is very good tense, and we use these tense to talk about habits, to talk about daily actions, to talk about repeated actions, and this structure is subject plus first form plus object, and whenever you want to make any negative sentence, then you use subject plus helping verb, subject plus do does plus not plus first form plus object, and when you want to make questions using present simple tense, then you use do does plus subject plus first form plus object. Happy learning, empowering education. So it's enough for today. Have a nice time. Nice to meet you. See you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.